So we'll be talking about the cell cycle. Basically, we will talk about its control mechanisms and regulations. Okay, so we all know that from a single cell, when the cell growth occur, it is converted into a multicellular body. Like a fertilized embryo, if it develops, it will develop into a full body, say animal or plant or human. So for this growth, the type of cell division that occur, this is called as the mitotic division. So we'll be talking about mitotic division which occur in the somatic cells. Okay. Now during this process, this whole process of growth, if the growth is uncontrollable or if the growth increases, then it may lead to some problem. If the growth decreases for some reason, then also it leads to some problem. Like for increasing, you may call it as tumor or cancerous outgrowth. If it is decreased, then we call it as dwarfism. So there is an need for what? Need to control the growth, and control in such a manner that it has to be regulated, that when to increase or when to decrease the cell division, so that the organism can function properly. So this whole thing we can study under certain mechanisms of control and regulations. Now, before we start on exact control and mechanism, there is something you should know about the cell division. We all know that the cell division occurs in a cyclic manner, and most of the part the cell is in a state which is called as the interphase. Okay, so this is the mitotic phase. Okay, this is the mitotic phase, and this complete cycle here till here, this is called as the interphase. So all this regulation and everything usually occur this is G1 phase, gap 1 phase, this is synthesis phase, this is G2 phase, and there is also something called as the G0 phase. Okay, so this is interphase. So in these phases, the complete growth of the cell occur. We usually call it as a resting phase, but actually it is a misnomer. It is the most active stage of a cell. And when we go to mitosis, in mitosis also we can see the mitotic cycle is also divided into certain stages. We know prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay, prophase, metaphase, anaphase and telophase, right? So this is in this manner all the cell cycle is divided. So this is interphase. Okay,
this is mitotic division and this is the interphase division. You can see interphase is quite long period. Now in this G1 phase, what happens in G1 phase? Just refreshing your memories what we have done earlier. G1 phase is actually the called as the gap phase, okay, and in this phase the cell is checked for any damage in the DNA, okay, DNA damage. Then in this phase there are many enzymes which are needed for the repair or further synthesis of the DNA. So those enzymes are made. Then ATPs, PASes are generated. And one important point that occur here is the activation of a specific protein, group of protein in fact, which is called as the cyclins. Okay, cyclins are the group of protein. Now this group of protein actually initiates the cell division, but not alone. They have to combine with another protein which is referred to as CDK protein, or we also call it as cyclin dependent kinase. So kinase जहाँ पे भी word आता है, it is the enzyme which phosphorylate the phosphate, ठीक है. सो phosphorylation में काम आता है ये phosphate group को attach करने में. Now these two, cyclin and CDK protein, they are the positive signals, ठीक है. आगे हम देखेंगे कि positive negative signals क्या होते हैं. So when this positive signal occur, so the cell enters into the process of transcription, ठीक है, and the cell enlarges. So this indicates that the cell has to undergo the cell division, or the cell is committed to the cell division. Okay. Then what happens in S phase? Now S phase में आपका जो काम चलता है वो आपका सिंथेसिस होता है बेसिकली, ठीक है. सिंथेसिस ऑफ एस फेज में होगा सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है. सिंथेसिस ऑफ डीएनए होगा मेन चीज़. नाउ फिर हम आते हैं G2 फेज में, ठीक है. G2 में क्या होता है कि G2 में ये देखा जाता है कि जो सिंथेसिस फेज में जो डीएनए बना है वो प्रॉपरली सिंथेसाइज्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है. प्रॉपरली सिंथेसाइज्ड हुआ है कि नहीं हुआ है. अगेन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स आर चेक्ड कि आगे बढ़ने के लिए प्रोटीन्स प्रॉपर है कि नहीं है, एंजाइम प्रॉपर है कि नहीं है, ATPase प्रॉपर है कि नहीं है. प्रोटीन में स्पेसिफिकली जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, वाई ट्यूबुलिन प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन इज द कंपोनेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोट्यूब्यूल आर नीडेड फॉर द स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ द क्रोमैटिड्स. ओके, स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए माइक्रोट्यूबुलिन ज़रूरी होता है. तो ये सारी चीज़ें होती है G2 फेज में, ठीक है. नाउ ये जो 3 फेजेस हैं, G1 सिंथेसिस एंड G2 फेज. नाउ ये फेज जब चल रहा होता है, इस फेज और इस फेज के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसको बोला जाता है
G1 चेक पॉइंट। ठीक है, G1 चेक पॉइंट यानी कि इस फेज में क्या काम हुआ है नहीं हुआ है, कितना हुआ है, वो चेक किया जाता है G1 फेज पे। ठीक है, फिर ये माइटोटिक फेज है। फिर आपका जब G2 से माइटोटिक डिवीजन पे जाता है तब यहाँ पे एक और फेज आता है जिसको हम बोलते हैं G2 चेक पॉइंट। तो यहाँ पे सिंथेसिस के बाद आएगा ये, इसके पहले आएगा, तो सिंथेसाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, और यहाँ पे प्रॉपर प्रोटीन्स और सारी चीज़ें बनी कि नहीं, इस पूरे का जो कार्यक्रम होता है वो आ जाता है आपका G2 चेक पॉइंट पे। देयर इज़ अनदर चेक पॉइंट विच इज़ बिटवीन द मेटाफेज एंड एनाफेज। ठीक है, मेटाफेज एंड एनाफेज जिसको हम बोलते हैं M चेक पॉइंट। ना M चेक पॉइंट स्पेसिफिकली दो चीज़ें देखता है। एक तो क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेसिक प्लेट पे अलाइन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और दूसरी बात जो क्रोमोसोम्स हैं, यू नो दैट क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, है ना। ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, एक ये पूरा एक क्रोमैटिड है, ये एक है, तो ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड है 1 और 2। ये दोनों आपस में यहाँ से जुड़े होते हैं बाय सर्टेन प्रोटीन, कोहेसन बोलते हैं उसको। ठीक है, और इनके एंड में देयर इज अनदर एरिया हियर विच इज कॉल्ड एज द काइनेटोकोर। सो द ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन और माइक्रोट्यूब्यूल which comes out of the centromere, okay, they attaches to the tubulin. So in M checkpoint this is also seen that the attachment of the kinetochore to the tubulin proteins और the spindle fiber कह सकते हैं are proper or not। ठीक है, ये चेक किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये अटैचमेंट नहीं होती है दोनों की तो क्या होता है कि क्रोमोसोम प्रॉपर से नहीं मूव होंगे और एक तरफ जो है वो पूरा का पूरा या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या एक्स्ट्रा क्रोमैटिड आ जाएगा, जिससे कि इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर्स जो होते हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये वाला यहाँ पे नहीं पहुँचेगा। ठीक है, ये तो हो गया चेंज यहाँ पे, राइट। लेकिन ये जो है ये एक तरफ चला गया एक सेल में और इस तरफ ये नलीफाई हो गया। ठीक है, सो इसीलिए ये चेक पॉइंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि प्रॉपर से सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। और ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती हैं सपोज़, ठीक है, ये तो मैंने आपको पूरा वो बताया कि एग्जैक्टली में ऐसा हो रहा है एक के बाद एक, इफ़ एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन एज डिसाइडेड, ओके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है सपोज़, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए कि हो रहा है नहीं हो रहा है, 3 पॉइंट्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स क्या क्या 3 पॉइंट्स हैं आपका। पहला जो है पॉजिटिव सिग्नल्स पे हम बात करेंगे। ठीक है, कि सेल जो है वो आगे बढ़े सेल डिवीजन की ओर। दूसरा, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो सेकंड हम नेगेटिव सिग्नल्स पे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेल डिवीजन अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है या डैमेज डीएनए है ना, तो वहाँ पे फिर नेगेटिव सिग्नल जाते हैं कि सेल डिवीजन आगे नहीं करना है। फिर तीसरी चीज़ जो आती है कि द टाइमिंग्स, ठीक है, द टाइमिंग्स एट विच these checks, positive and negative signals are given। ठीक है, ये आती है टाइमिंग्स पे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं पॉजिटिव सिग्नल जो हैं हमारे, पॉजिटिव सिग्नल ज़्यादातर हमारे जो होते हैं ये साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, ये पॉजिटिव हैं। ठीक है, फिर जो नेगेटिव आते हैं आपके, नेगेटिव में आपको प्रोटीन कॉम्प्लेक्स P53
देन P21, फिर कुछ एक्सेसरी प्रोटीन्स भी आते हैं जो कि इनको एक्टिवेट करते हैं अल्टीमेटली, फॉर एग्जांपल ATM, ठीक है, या ATR, और भी हैं काफ़ी सारे, ये कुछ एग्जांपल हैं सिर्फ, है ना। तो ये सारे जो हैं एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल्स के, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि हम करेंगे नेक्स्ट इसमें सेल साइकिल रेगुलेशन में, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डालती हूँ, ठीक है।